Good afternoon to all. Welcome to Vanik Smart Online Class. Today we will discuss OCS रो CSAT paper रो set D रो English sections. In total 4टा RC आसला reading comprehensions ता विषय में discussions करने बा. Okay. So let's start. First, and this is set D. Set D रो हमें discussions करचुंती. First देखो ये जो पैसेज देखिए डिसीजन मेकिंग देखिए व्हेन वी फाइंड ए प्रॉब्लम एंड हाउ डू वी सॉल्व इट से विषय डिस्कशन है. तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आर क्रूशियल स्किल्स फ्रॉम नेविगेटिंग लाइफ चैलेंजेस. एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल few points about RC. Whenever you do attempt to solve any RC, first go through the questions first, so that you will get some ideas which questions you have to solve. Okay, the first is according to paragraph, what is the first step in effective problem solving? तो आम माइंड रे आसो कि हमको फर्स्ट स्टेप कौन नंबर अच्छी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. सेकंड क्वेश्चन जी देखिए बिले second question is a common pitfall mention. Okay, so find out the keywords. We have to find out the keywords. In first questions we got the keywords, the first step in effective problem solving. In second questions we got the common keyword, that is common pitfall. Second, what is the final and often overlooked step in problem solving cycle? That means which step we usually overlooked. Next question, the evaluation of potential solutions should be based on. Okay. Now, let's go through the passage. Effective problem solving and decision making are crucial skills from navigating life's challenges. Okay, both personal and professional. The process is not a linear one, but rather a cycle that often begins with clearly defining the problem. A common pitfall, here we got it. A common pitfall is to rush towards solution without fully understand. That means first common pitfall जोटा कि mistake होची कोटा बिले. Now we rush towards solutions. आमे solutions आड़ो को दौड़ थाओ without understanding the underlying issue. Issue रो main मुद्दा टा को ना बुझी कि आमे solutions आड़ो को run कर थाओ, rush कर थाओ, which can lead to treating symptoms rather than the cause. Okay, once the problem is defined, देखो first as the once the problem is defined, effective decision makers generate multiple potential solutions. That means first आसिला कि आमको जो क्वेश्चन पचे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. द फर्स्ट होची कि प्रॉब्लम को डिफाइन कराइबो. द आंसर वुड बी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. ओके, देन वी जनरेट multiple potential solutions. Okay, then resisting the urge to settle on the first idea. जेतरा हमें रेजिस्ट करिबा कि फर्स्ट आइडिया को सेटल करिया पाए, they then evaluate each alternative based on a set of criteria such as feasibility, potential impact and resource requirements. Now then evaluate each alternative, जो step nature ताकू evaluate करा जाओ. Then a set of criteria such as feasibility means that is possible, potential impact रहितवा दरकार and resource requirements. This step often requires a careful analysis. That means after implementations, after evaluations, सब स्टेप को इवैल्यूएशंस पर एटी कोची कि दिस स्टेप ऑफन रिक्वायर्स अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ ट्रेड. आम गोटे केयरफुल एनालिसिस करिवार रोची. एंड द फाइनल डिसीजन शुड बी रीजन चॉइस, नॉट ए क्विक गॉट रिएक्शन. इट शुड नॉट बी अ क्विक, इट शुड बी अ रीजन चॉइस. एटा गोटे रीजन होइतवा दरकार. एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन the process concludes with a crucial review of the results to understand the effectiveness of the chosen solutions. This reflective step is vital for learning and refining one's approach to future problems. तो मैंने लास्ट टू रेफर्स कर देची कि this reflective step in a is vital. एटा गोटे इम्पोर्टेंट फॉर कोथि पाई ना जदि फ्यूचर रे किछि प्रॉब्लम आछि ताको अप्रोच करिया पाई इस लास्ट स्टेपटा बा जो स्टेप आमे नै छंती इम्प्लीमेंटेशंस कला परे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पाई जो स्टेप नै छंती सेटा को फ्यूचर रे हेल्प करिवो. ओके, आ काली रो गोटे पॉइंट रे बिले ओसीएस रो तो क्वाइट इजी रहितला आमे सीसैट पेपर कहि परिबा.
आउ कहीं ना এটা गोटे इजिली पिले तुम मैंने बुझीपार सैड्रु ओडिया भी दे जदि किए इंग्लीश रे आरसी बुझीपार न तो ओडिया बुझिकी भी आंसर दे पार टे कॉमन सेंस यूज करके भी आम आंसर दे पार ओके तो आ विषय बेसिस किसी मुझे जो इन डिटेल ता भीतर पैराग्राफ रे लाइन बाय लाइन बुझेनी जस्ट खाली की पॉइंट कहीकि आम क्लासेसटा को कंटिन्यू कर तो ये फर्स्ट स्टेप जानीगले पे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम तापर देखिए बोले 27 a common pitfall कौन है पे common pitfall आसले generating too many potential solutions it as was C नहीं पार generating too many potential solutions 28 what is the final and often overlooked step कोटा पे आम overlook कर दे था ना रिव्यू न करी रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशंस जोटा कि ऑलरेडी कही आम फर्स्ट थिंग कौन कर कोटा बेस्ट एनालिसिस ऑफ ट्रेड ऑफ दिस टॉप ऑफन रिक्वायर्स ए केयरफुल एनालिसिस कोड़ा पे ना जोटा कि लास्ट टाइम इवालुएट कलर तो रिव्यू करार अच्छे केते दूर एटा ठीक से ऑप्शंस भी नहीं पार नेक्स्ट 29 द इवालुएशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन क्या बेस्ट हवा कथा पे हाउ क्विकली दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड नो इट शुड नॉट बी इन रश हवा कथा पे पर्सनल फीलिंग एंड वाइसेस नो नेगेटिव वर्ड आसुची criteria such as feasibility and impact रहा दरकार feasibility and potential impact 8 point आसुची पे so options C is the right answer clear now move to another one it गोटे case study ऊपर देछि तो देछि a senior marketing manager Sasmita is negotiating a new contract with a long standing client retail chain. The client is pushing for a 50% discount, citing budget constraints while Sasmita's team can only feasibly offer a 5%. माने ये client जो 15% discount demand करछि but सेमाने feasible अछंती possible तांको पाखरे 5% discount without sacrifice the quality of service means they will provide the 5% discount and with that they will not they will provide the good quality service. During the negotiation the client's representative Jiban mentions a competitor's lower price multiple times framing it as non-negotiable benchmark. Sasmita listens patiently that means when some negotiation is going on Jivan जे कि गोटे competitors अच्छी तार गोटे लोअर प्राइस से देछे बट सस्मिता जे नेगोशिएट करथला गोटे कॉन्ट्रैक्ट को से लिसन्स पेनफुली एंड एक्नॉलेजिंग जीवन कंसर्न को एक्नॉलेज करछे Instead of directly debating the competitor's price, the competitor price को debate न करके she shifts the focus को shift करछे केमती by detailing the unique high quality service and strategic value her company provides. तांका कंपनी कौन क्वालिटी प्रोवाइड करुच्छे कौन स्ट्राटेजी दउछे कौन यूनिक जिनस अच्छे से विषय स्टिक हो रही एंड दैट द कंपिटिटर कैनॉट मैच जोटा कि कंपिटिटर मैच कर पारिबो नहीं. She presents a creative tiered solutions where the client can receive a 10% discount in exchange for a longer term. Once only 10% discount पाई परिबो तासु तो long term business long term रहिबो 2-year contract which ensures a company stability and offers the client more long term value. That means and finally से bother न है कि ता ऊपर डिबेट न करी कि तांको कंपिटिटर रो लोएस्ट प्राइस जो दैछि ता ऊपर डिबेट न करी से स्टिक हे रही छी ओके तांको क्वालिटी कौन देछि गुडनेस कौन अच्छी भीतर प्रोडक्ट हाई क्वालिटी कौन रही सर्विस कौन देछि स्ट्रेटेजिक वैल्यूज कौन देछि विषय स्टिक रही. सो देखिए क्वेश्चन देखिबा बाय ऑफरिंग ए टायर्ड सॉल्यूशंस विथ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट व्हाट डिड सस्मिता इफेक्टिवली डू शोड अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस को से लैक करनी एटा नेगेटिव होबनी. प्रायोरिटाइज हर कंपनीज नीड्स ओवर द क्लाइंट्स सिग्नलिंग ब्रेकडाउन इंटरेस्ट नो प्रायोरिटाइज करनी. Prioritized her company's needs over the client's signaling breakdown interest no. Used a win-win approach to address the client's desire for a larger discount while securing more stable long-term commitments to her own business. Okay. एटा पे सी टा को नहीं पारे गोटे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर हर ओन बिजनेस को रेफर्स करे ओके तापरे मेड स्ट्राटेजिक हेनी तो ऑप्शन सी नहीं पार क्लियर. नेक्स्ट को जीवा Which negotiation strategy did Sasmita primarily use to overcome the impasse
created impasse man hurdle ko bujhaibo impasse created So देखियो एठी को नेगोशिएशंस करछि मेकिंग अ कंसर्न बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट क्लोज टू द क्लाइंट्स डिमांड से कोन किछि डिस्काउंट देतला कि ना डिस्काउंट दे नतला अडॉप्टिंग एन एग्रेसिव स्टैंस एग्रेसिव नतला बिले reframing the value proposition to shift the focus from price to unique benefits yes ता फोकस टा को से शिफ्ट करथिला प्राइस टू थारु ताको यूनिक बेनिफिट्स जाछन ताको से शिफ्ट करथिला तो ऑप्शन सी नै चला ओके नेक्स्ट को जिबा ओके नाउ ये जो पैसेजटा अच्छी पिले एटा गोटे बेस करछि का का भितर इंडियन पठान और तमिल स्टेट भितर करछि एटा गोटे डाइवर्सिटी ऊपर देछि क्वाइट लेंदी सबुठारु एटा ही सबुठ लेंदी पैराग्राफटा थला ओके तो जे आमे देखिया पिले मो आ विषय इन डिटेल डिस्कशंस न करिके क्वेश्चंस पॉइंट को जाउछि व्हाट इज सेड अबाउट द पठान एंड द तमिल इन द पैसेज से कहछि पैसेज रे पठान और तमिल विषय रे कौन कह दे हैव लिटिल इन कॉमन आउटवर्डली देखो द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडियस इट इज ऑब्वियस माने क्लियर इट लाइज ऑन द सरफेस एंड एनीबडी कैन सी इट कंसर्न इटसेल्फ विद फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज विद सर्टेन मेंटल हैबिट्स एंड ट्रेट्स there is little in common to outward seeming between the Pathan of the northeast and the Tamil in the far of south. That means options A and above they have little in common outward. Okay. Next kujiba 33 kujiba. Why is it not surprising that India has influenced the Pathan? Kahi ki pile eti mark kariba. This is not surprising for these border hands and indeed Afghanistan also were united with India for thousands of years. माने India सहित Afghanistan बहुत वर्ष धरि united ही रहितला because option A नबा because the region was historically united with India. Clear? Now 34. What does the passage say about the historical religious affiliations of Afghanistan and Central Asia? It is marked here. It is fascinating. The distinct features of them have still. Okay. During the period of epics, the Hindus, the frontier, Afghanistan, the parts of the principal difference. They were something living. Okay. The Kashmir, the Rajputs have the distinct features of them. There was something going. There is no mistake impressed as this obvious Tamil. This is not something for this. The ratios in African parts of the advent of Islam were large. Now, marker the old Turkish and other races who inhabited Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and earlier still. Means before the advent of Islam. The people who were staying in Afghanistan region, they were Buddhist. So options A is the right answer. They were Buddhist and earlier Hindus. So options A is the right answer. Next move kariba next questions ko. 35. What does the author suggest about the different Indian linguistic and regional groups? Okay, different region linguist kon apopile they written distinct. ये लाइन टा लिखा है बोले फॉरेन इन्फ्लुएंस जस्ट वेट good time. Just wait for 1 minute.
पढ़े देखना ये गोटे मिनट पे वेट करिए नहीं सॉरी नहीं ये स्क्रीन टा कोड पड़ेगा हाँ सॉरी ओके चल ठीक हाँ सो हमें 35 रो आंसर कौन करिए प्ले जेहेतु देशु फॉरेन influence pour in and often influence that culture, absorb disruptive tendencies, give immediately to an attempt to find a synthesis. So, a line ru ame clearly बुझ परिबा कि question number 36 टा एटा हे परिबो कि it absorb and synthesize them. Clear? Next कुछ बा. Now, next question. At a weekly team meeting, the project manager Aarti asked for updates on the Pratham project. Ravindra, a junior team member, reports that his part of the project is facing a significant delay due to unforeseen technical complications with a new software module he is using. While Ravindra is explaining the issue, he seems flustered, avoiding eye contact with Aarti and speaking in a low voice as he finishes his colleague Avilas immediately interjects. The problem in that Ravindra did not read the documentation properly. The instructions for that module are very clear. Another team member, Sunanda, notices Ravindra's discomfort and calmly asks Avilas, did you have a chance to look at Ravindra's specific code? Are you basing that on the general documentation? And this prompts a more constructive discussion where Sunanda offers to help Ravindra debug his issue. That means टीम चलती टीम डिस्कशन होते सुनंदा जी कि अभिलाष सॉरी ये अभिलाष जी रविंद्र को अटैक कर अटैक इन द सेंस माने किसी भरवाली डिफेम करिया को ट्राई करुच्ची मीटिंग मझे तार सुनंदा पेसेंटली शुणिकी केमती कंफर्ट करुच्ची तार सपोर्ट केमती से विषय कही. So, what did Sunanda demonstrate by asking Avilas a clarifying question and offering help Ravindra? केमती करछि बिले ना एटी empathy means होछि empathy तारो ता कथा को बुझछि ता पेन को बुझिछि. Empathy and active listening by recognizing Ravindra's distress and collaborative problem solving. तो ऑप्शन सी टा वन सर एटी लीडरशिप देनी कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव हबनी कि सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल हबनी तो ऑप्शन सी जो मानर आंसर देछ करेक्ट अछि. Next kujiba 61. Which of the following best describe Avilas's communication style? Avilas रो कौन था पिले aggressive थिला एटी ता होछि से refers को immediately interjects the problem in that Ravindra did not read the documentations को Ravindra पढ़ी ही नथिला तबने aggressive way रे कहिछि तो ऑप्शंस बी नहीं परिबा. Next. Now आउ गोटे पैसेज देखिए 62 to 65 क्वेश्चंस एटा भी सेम जिनस पिले एटा गोटे जापानीज इन्वेस्टर्स इंडिया रे इन्वेस्टमेंट करछंती ता विषय रे डिस्कशन कराई छी इंडिया रो इन्वेस्टमेंट मार्केट ऊपर डिस्कशन होइछे. तो फर्स्ट देखिबा द ऑथर हैज एप्रिशिएटेड जापानीज फॉर दैट कोथ पे ऑथर एप्रिशिएट करछन जापानीज को एडी मार्क कर पिले देखिए कि द एम्बेसडर प्लीडेड ओके will have to make extended offer that they have Japanese to have passed through. Last line देखो पहले that the Japanese to have passed through a stage in the 50s when their products were derided as substandard and shabby. जेते बड़े तांको प्रोडक्ट को पहले बहुत ही खराब प्रोडक्ट थिला तांको प्रोडक्ट को मध्य बाहर कर दउथिले सेतबे they have come out of that ordeal of fire to emerge as an economy superpower. तबरे से आज डेट से ओवरकम है इकोनॉमी सुपर पावर होती speaks a much of their doggedness to pursue goals against all odds acceptable standard. Against all odds acceptable standard, there is no gainsaying that 3 past record of Japanese investment is poor benchmark for future expectations. That means एटा कोथ में एप्रिशिएट करछंती क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन द 50s ना पासिंग थ्रू एन ऑर्डर ना परसेवरेंस इन रेजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखो सेमानक भितर गोटे परसेवरेंस थिला परसेवरेंस मीन्स होची कंटिन्यूटी थिला सेमान क्वालिटी प्रोडक्ट्स को स्टिक है कि
क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कले तेणु ऑप्शन सी नहीं पारे पिले पासिंग थ्रू एन ऑर्डर हेनी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हेनी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग द 50s से एप्रिशिएट करनथिले तांकर परसेवरेंस स्किल जोगु कंटिन्यूटी स्किल जोगु एटी ऑथर जापानीज मान को एप्रिशिएट करछन्ते। नाउ 63 the purpose of the author in writing this passage seems to be discourage foreign investment in India no foreign investment को discourage करना critically examine करछन Indian investment environment को एटा examine करछन आउ किछ पिलाबन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कि इंडिया रो गोटे रोजी पिक्चर कथा वे डिस्कशंस करना ऑप्शंस भी नहीं परिबा। According to Japanese ambassador, India offers a comparative advantage to foreign investor in terms of कोथरे पिले in terms of that is higher productivity investment market share to expensive wage labor by productivity level to a large extent तो ऑप्शन से हायर प्रोडक्टिविटी करिया पिला ऑप्शन सी न 65 The author attributes Japanese emergence as an economic superpower to केमती पिले their ability to overcome any ordeal, their tenacity and perseverance despite unfavorable circumstances पिले ए options 2 टा नहीं परिबा and their ability to improvise and adopt a globally acceptable quality level their ability to improvise question and adapt question globally acceptable quality level तो options एटा थर्ड भी नहीं परियो तो options 2 and 3 नेबो एटा options B is the right answer clear। Now another paragraph एटी दीटा क्वेश्चन अच्छी एटा गोटे चिल्ड्रेन जे कि स्टबन अच्छी से पर्टिकुलरली गोटे ताकू दिखाई ब्रेड एंड मिल्क दे खायापाई बट से डिनाई कर कौन डिनाई कर से विषय गोटे स्टोरी अच्छी ओके तो व्हाट वाज द एंट ट्राइंग टू टेल निकोलस को तो कौन कहूला ना पर्टिकुलरली दैट ही शुड हैव ईटेन ब्रेड एंड मिल्क को खायापाई कहा जाउतला ही शुड प्ले विथ कजिन्स एटा मेंशन करनी ही वुड बी पनिश्ड इफ हिज मिसबिहेव ए विषय मेंशन नहीं कि हु that he could choose to step back if he wished ए भी कह जान पिले एटा बहुत ही सहज थिला एटा डायरेक्ट आंसर ही शुड हैव ईटेन ब्रेड एंड मिल्क को बुझेबो। नेक्स्ट को जिबा व्हाट मेड निकोलस टू श्योर अबाउट व्हाट ही सेड काहे कि निकोलस कहि कि निकोलस बेसिन ब्रेड ही हैड ओके निकोलस कहि कि से जो ब्रेड एंड मिल्क खाइतला सेटी गोटे फ्रॉग थिला आ से फ्रॉग ता काहे कि ना ही हिमसेल्फ हैड पुट इट इन it is clearly देछे he continued nevertheless to talk what he seemed complete nonsense and described with much detail the colorations and markings of the alleged frog. The dramatic part of the incident was that really was a frog in Nicholas basin. He had put there himself. He had से निजे ही रखितला so option he himself had put it in. Okay. Now most probably it is the last questions of this set. Why did Nicholas consider his aunt had been proved to be wrong? Because she said that there was no frog in the bowl because से कहथिला कि से बाउल रे किछु frog नथिला but से निजे रखिथिला सेति पय से ऊपर स्टिक हे रहितला इंसिस्ट करथिला कि ना there is the frog in bread and milk. Okay, the options B is the right answer. Hope with this we completed all the questions of CSAT English sections. Chalo, thank you pile and wish you all the very best. जो मान सब attempt करिछ समस्त पहिले all the very best. समस्तंकर CSAT पेपर भल हिथिबो and जो मानकर CSAT पेपर भल हिछ आ GS पेपर भल हिछ ए बेटर मेन पाई रेडी हिछ. Thank you pile.